अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑन द रेनी रिवर विच इज़ रिटन बाय टीम ओ ब्राइन। ऑन द रेनी रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ अ टीम ओ ब्राइन कलेक्शन द थिंग्स दे कैरीड डेट पब्लिश इन 1990। दिस स्टोरी शोज ओ ब्राइन इमोशनल एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन ही इज़ ड्राफ्टेड फॉर अ वियतनाम वार। जब उसे 1968 में गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस मिल गया था कि तुम्हें वियतनाम वार में जाना है, ज्वाइन करना है, उसको लड़ना है, तो उसके बाद वो जो है वार में नहीं जाना चाहता था। वो कह रहा था कि मैं कनाडा चला जाता हूँ, वार से बच जाऊँगा, ऐसे जो है। लेकिन फिर उसके माइंड में ये भी बात आती थी कि अगर वो वार में नहीं जाएगा, नहीं जंग में लड़ेगा जाके, तो उसके घर वाले या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे। तो सोशल प्रेशर की वजह से उसने एट लास्ट ये डिसाइड कर लिया था कि वो जंग में जाएगा। इट हाईलाइट्स हिज फियर, शेम एंड स्ट्रगल टू चूज बिटवीन फ्लीइंग टू कैनेडा। फ्लीइंग, ठीक है, फ्लीइंग का मतलब भागना है, FLEEING, फ्लीइंग, और फ्ली का मतलब होता है भागना, टू कैनेडा और गोइंग टू वार टू अवॉइड सोशल जजमेंट। टिम ओब्रायन इज एन अमेरिकन राइटर एंड बेस्ट known for his work The Things They Carry, which he was born on 1946 and he is still alive. Tim O'Brien, a 21 years old college graduate, received a draft notice to serve in the Vietnam War. 21 साल का था वो, ग्रेजुएशन उसने कर ली थी। दिस स्टोरी टेक प्लेस इन द समर ऑफ 1968, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट किन लोगों को ड्राफ्ट करती थी और क्यों करती थी, ठीक है। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियतनाम वार, पीपल वर ड्राफ्टेड बिकॉज द गवर्नमेंट नीडेड सोल्जर टू फाइट इन अ वार। गवर्नमेंट को जरूरत होती थी कि लोग आके लड़ें वार में। एक तो ये वजह थी, इसलिए गवर्नमेंट लोगों को करती, खासतौर पर यंग लोगों को करती थी। द ड्राफ्ट वाज अ सिस्टम वेयर मैन टिपिकली बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 26, 18 से 26 साल के दरमियान जितने भी जवान होते थे उनको ये ड्राफ्ट नोटिस मिलता था कि तुम लोगों ने जंग में लड़ना है और आना है। Were selected by the government to serve in the military. If a person was drafted, they were legally required to join the army and fight. अगर किसी को ड्राफ्ट कर लिया जाता था तो उस पर लाजिम हो जाता था कि उसने आना है और लड़ना है, और किसी सूरत भाग नहीं सकता था। एक सूरत में भाग सकता था अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न है, unless they have a valid reason to be excused. On the Rainy River is all about Tim who torn between fleeing to Canada or joining a war he opposes. Themes in this main story are as follows. The first one is shame and fear of judgment. On the Rainy River, shame and fear of judgment plays an important role in Tim decision making. Tim doesn't Tim doesn't want to go to war because he believes it's wrong, but ही इज़ आल्सो टेरिफाइड ऑफ बीइंग सीन एज अ कवर्ड, कि मुझे लोग बुज़दिल ना कहें अगर मैं कनाडा की तरफ भाग गया। ही इमेजिन एवरीवन who knows, family, friends and even strangers, judging him if he refuses to fight. This fear becomes so strong that it overpower his personal beliefs. He feels trapped not because he wants to go to war, but because he doesn't want people to think less of him. Shame become a powerful force of judgment, can control our action and make us to think we might regret, all because we worry too much about other things of us. More moral dilemmas in wartime. This story shows the difficult moral dilemmas that people face during war. Tim is torn between two options. He can go to the war, which he believes morally wrong, or he can flee to Canada, which means abandoning his country and risking shame. Neither option feels right, and both come with seriousness options. This inner conflict makes him question his values, his responsibilities, and what it means to be brave. Through team struggle, the theme of moral dilemmas reminds us that choices made in wartime are often more about survival and identity than clear-cut answers. Personal vs social pressure. This story also shows the tension between the personal beliefs and social expectations. Tim doesn't want to fight in a Vietnam War because he thinks it's wrong, but society expects him to serve his country. He feels pressures from people around him and imagine a crowd who judging him. This imagines a crowd pressurized him how much weight he places on other people's opinions. On the other hand, Tim wants to stay true to himself. He doesn't want to be a label or coward. The story shows how society can push individuals to act against their own values, forcing them to conform but of fear of judgment. Tim O'Brien uses this theme to show that how difficult it can be balanced personal beliefs with the expectation of others, especially in wartime. The whole story shows how a fear of judgment can force individuals to make life alternating decisions against their personal beliefs. So I'm done this video.
नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।